एमती अनेक प्रश्न सृष्टि करिछि। मध्यवित्त और चाकरियांक पई केते सहायक हेबो एही बजेट? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को एहा केते प्रगतिशील करिवो? छता महंगा और हीरा सस्ता केते जनक पई एवं कहा पई लाभ हेबो? घरे उद्योग को प्रोत्साहन देबाकू किछिटा आयकर रे कोहळ करा जाइछि। एथि सहित डिजिटलाइजेशन को गुरुत्व दे जाइथिबा पळे आसंता मार्च सुधा आसिबो एलआईसी रो इनिशियल पब्लिक ऑफर। ई तमाम खबर को नै चलंत आरंभ करिबा आजिरो फोकस पॉइंट। आसिला 2022-23 आर्थिक वर्षर बजेट लोकाभिमुखी लागु नथिले मध्य भारतीय अर्थनीति को दीर्घकालीन फायदा देव। अर्थनीति को त्वरित करने को बजेट रे समस्त प्रकार उद्यम करा जायछि। तेबे साधारण लोक एवं चाकरिया वर्ग को निराश करिछि निर्मला सीतारमण को एही बजेट। आयकर सीमा रे कोनोसी परिवर्तन करा जाय नथिबा बेले आयकर संग्रह बढ़ाइबाकू सरकार नेछंती सुधारमूलक पदक्षेप। घरे उद्योग को प्रोत्साहन देबाकू आयकर रे किछिटा कोहळ करा जायछि। डिजिटलाइजेशन को गुरुत्व दे जाइथिबा पळे आसंता मार्च सुधा आसिबो एलआईसी रो इनिशियल पब्लिक ऑफर। 2030 को नजर रखी अक्षय शक्ति क्षेत्र पई सरकार आरंभ करिसंती बड़ पदक्षेप। The king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. महाभारतर शांति पूर्वर श्लोक उद्धार करी बजेटर प्रमुख अंश को प्रवेश कले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। जनमंगल एवं धर्मर कथा व्याख्या करी बजेटर बहु प्रतीक्षित टैक्स ब्रैकेट को प्रवेश कले अर्थमंत्री। हेले आम आदमी ठारू आरंभ करी चाकरिया वर्ग होइछंती निराश। कोविड साधारण जनता को आर्थिक मेरुदंड भांगी दैथिबा बेले सरकार बजेट रे आयकर सीमा वृद्धि करबा नै आशा करिथिले समस्ते, किंतु सेभଳି किछि हेलानी। आयकर सीमा अपरिवर्तित रखिछंती सरकार। तेबे करदातांक पई एक सुजोग दैछंती सरकार। आयकर दाखल रे जो मानकर त्रुटि होइछि बा जो माने किछि लुचाइछंती से माने एबे 2 वर्ष रे सिंगल विंडो रे ताहा घोषणा करि परिबे। New updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. Honorable Speaker, sir, presently, if the department finds out that some income has been missed out by an assessee, it goes through a lengthy process of adjudication. Instead, with this proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the assessee herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. जातीय पेंशन योजना एनपीएस को केंद्रीय कर्मचारी 14% थिबा पड़े राज्य सरकार कर्मचारी क्षेत्र में यह 10% रही, जहां 14% कर उभय केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारी सामाजिक निरापत्ता को सुदृढ़ करने को चेष्टा करिसेंती सरकार। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्षेत्र में सरचार्ज ह्रास होईछि 12% रु 7% करा जाईछि। वार्षिक आय 1 कोटी रु 10 कोटी मध्य थिबा कोऑपरेटिव सोसाइटी गुड़िक क्षेत्र में यह लागू हेबो। भिन्नक्षमक बीमा क्षेत्र में कर संपूर्ण छाड़ करा जाईछि। Cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay
the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. Honorable Speaker, sir, I also propose to reduce the surcharge on cooperative societies from the present 12% to 7% for those having total income of more than 1 crore and up to 10 crores. This would help in enhancing income of cooperative societies and its members who are mostly from the rural and from farming communities. डिजिटल संपत्ति बा मुद्रा उपरे कर लागू करिसेंती सरकार। यहाँ परे 30% कर लागू करने को घोषणा होइतिबा बेले खूब शीघ्र भारतीय रिजर्व बैंक तार निजस्व डिजिटल करेन्सी आनिब। स्टार्टअप गुड़िक टैक्स रिहाती आसंता वर्ष मार्च मास जाए संप्रसारण करा जायछि। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र आय एवं लाभ उपरे लागू होइतिबा सरचार्ज को व्यावसायिक खर्च भावे ग्रहण करा जिवो नाही। मेक इन इंडिया अधीन रे घरे उद्योग को प्रोत्साहन देवा को आमदानी शुल्क 7.5% को ह्रास करा जायछि। मसृण हीरा एवं जेम स्टोन उपरे सीमा शुल्क 5% को ह्रास करा जायछि। Digital rupee. Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. बैंकिंग क्षेत्र में सुधार आने को बजेट रे चेष्टा करिसेंती सरकार। 2022-23 आर्थिक वर्ष रे 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को 100% कोर बैंकिंग व्यवस्था को अणाजिब। देशर 75 जिले में 75 विभिन्न कमर्शियल बैंक रो डिजिटल यूनिट खोलिब। विनियोग नहीं बजेट रे सबुठारु बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। आसंता मार्च सुधा आसिब भारतीय जीवन बीमा निगम बा एलआईसी रो इनिशियल पब्लिक ऑफर। वर्तमान एलआईसी रे भारत सरकार 100% अंशधन रहिछि। In 2022, 100% of 1.5 lakh post offices will come on the core banking system, enabling financial inclusion and access to accounts through net banking, mobile banking, ATMs, and also provide online transfer of funds between post office accounts and bank accounts. This will be helpful especially for farmers and senior citizens. नुआ आईन अनुଯାयी स्वतंत्र अर्थनैतिक जोन ने हेबो परिवर्तन। एहार नाम परिवर्तन सह राज्यगुड़ी को भागीदारी कराइबा को बजेट रे घोषणा करिसेंती सरकार। स्वतंत्र अर्थनैतिक जोन को वैषयिक ज्ञान कौशल रे समृद्ध करबा को लक्ष्य रखा जायछि। आसंता वर्ष सुधा देश रे उपलब्ध हेबो 5G। खूब शीघ्र 5G स्पेक्ट्रम नीलाम नहीं सरकार करिबे घोषणा। कोयला गैसिफिकेशन एवं कोयला को रासायनिक पदार्थ को रूपांतरण करने को 4टी पायलट प्रकल्प आरंभ करा जिवो। अक्षय शक्ति क्षेत्र को प्रोत्साहन देवा को बजेट रे होइछि व्यवस्था। 2030 सुधा सौर शक्ति 280 गीगावाट करने को लक्ष्य रखा जायतिबा परे एथिपई अतिरिक्त 19,000 कोटी टंका व्यय बराद करा जायछि। Telecom sector. Telecommunications in general and 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. A scheme for design-led manufacturing will be launched to build a strong ecosystem for 5G as part of the production-linked incentive scheme. To enable affordable broadband and mobile service proliferation in rural and remote areas,
5% of annual collections under the Universal Service Obligation Fund will be allocated. This will promote R&D and commercialization of technologies and solutions. Our vision is that all villages and their residents should have the same access to e-services, communication facilities, and digital resources as urban areas and their residents. The contracts for laying optical fiber in all villages, including remote areas, will be awarded under the BharatNet project through PPP in 22 and 23. Completion is expected in 2025. Measures will be taken to enable better and more efficient use of the optical fiber. Export promotion. 2021-22 आर्थिक वर्षर बजेट व्यवहार 34.83 लाख कोटी टंका थिला। परे ताहा संशोधन करा जाई 37.70 लाख कोटी टंका होइथिला। तेबे 2022-23 आर्थिक वर्ष पई 39.45 लाख कोटी टंका बराद करा जाईछि। एथि मध्यरु 22.84 लाख कोटी टंका ऋण आकार रे आसीबो। कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.68 लाख कोटी टंका आकलन करा जाईथिबा बेले जीडीपी रो एहा 4.1% हेबो। 2022-23 आर्थिक वर्ष रे वित्तीय संकट मोट घरे उत्पाद बा जीडीपी रो 6.4% हेबो बोली आकलन करा जाईछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। चलित बजेट रे भित्तिभूमि विकास एवं आत्मनिर्भरता को गुरुत्व दिया जायछि। राजपथ प्रशस्तीकरण, नदी संयोगीकरण, पूर्वोत्तर एवं सीमावर्ती गाँव विकास समेत पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान को प्राथमिकता देछंती केंद्र सरकार। कृषि क्षेत्र में केमिकल फ्री, नेचुरल फार्मिंग, किसान ड्रोन, डिजिटलाइज्ड लैंड रेकर्ड, कृषि स्टार्टअप एवं वन नेशन वन लैंड रजिस्ट्रेशन व्यवस्था करा जायछि। वंदे भारत योजना रे 3 वर्ष रे गड़िप 400 नुआ ट्रेन। कृषि उत्पाद परिवहन पई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट एवं पोस्टल रेलवे पार्सल योजना। डिजिटल शिक्षा पई आसीबो वन क्लास वन टीवी चैनल। सामरिक सामग्री उत्पादन पई घरे शिल्प गुड़ी को मिलिबो 68% पुंजी। सेपरी नारी शक्ति प्रोत्साहन पई सक्षम योजना रे 2 लाख अंगनवाड़ी केन्द्र उन्नति करा जिवो। उज्ज्वला योजना रे शामिल हेबे आउ 1 कोटी परिवार। पीएम हाउसिंग योजना रे 80 लाख नुआ घर निर्माण करिबे केंद्र सरकार। 2022-23 साधारण बजेट रे भित्तिभूमि विकास को प्राथमिकता। 5टी बड़ भित्तिभूमि प्रकल्प हाथ को नहीं केंद्र सरकार। निर्माण हेब 25,000 किलोमीटर जातीय राजपथ। विभिन्न राज्य रे 5टी नदीर संयोगीकरण करा जिवो। प्रधानमंत्री बासगृह योजना रे व्यय हेब 48,000 कोटी एवं पूर्वोत्तर राज्य रे पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव पई रखा जायछि 1500 कोटी टंका। पीएम गतिशक्ति विकास योजना रे रहिछि 7टी इंजिन। सेगुड़िक हला रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एवं लॉजिस्टिक। एहा सह सामाजिक भित्तिभूमि एवं क्लीन एनर्जी को बजेट रे गुरुत्व दिया जायछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहछन्ति जे केंद्र, राज्य एवं घरोई सहभागिता रे देश रे भित्तिभूमिर विकास करा जिवो। PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a transformative approach for economic growth and sustainable development. The approach is driven by 7 engines, namely roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. All 7 engines will pull forward the economy in unison. These engines are supported by the complementary roles of energy transmission, IT communication, bulk water and sewerage, and social infrastructure. Finally, the approach is powered by clean energy and Sabka Prayas. The efforts of the central government, the state governments, and the private sector together, leading to a huge job and entrepreneurial opportunities for all, especially the youth. बजेट रे कृषि क्षेत्र को प्राधान्य दिया जायछि। केमिकल पाई नेचुरल फार्मिंग, फसल मूल्यांकन पाई किसान ड्रोन, डिजिटल लैंड रेकॉर्ड,
कीटनाशक सिंचन एवं कृषि स्टार्टअप पर स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। फसलर सर्वनिम्न सहायक मूल्य एमएसपी बाबद चाषी को मिल 2.37 लाख कोटी टंका। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग स्टार्टअप पर नाबार्ड माध्यम पांठि प्रदान करा एहा सह कृषक मानकु वैषयिक ज्ञान कौशल मध्य जोगाई दिया of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. Chemical-free natural farming will be promoted throughout the country with a focus on farmers' lands in 5-kilometer wide corridors along the river Ganga at the first stage. Services to farmers with involvement of public sector research and extension institutions along with private agri-tech players and stakeholders of agri-value chains. A scheme in PPP mode will be launched. रेलवे ट्रैक रे गड़िब 400 वंदे भारत ट्रेन। आसंता 3 वर्ष मध्य भारत रे निर्माण हेब एनर्जी एफिशिएंट 400 नुआ ट्रेन। कृषि क्षेत्र को नजर रखी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना आरंभ करिब रेल विभाग। एथिरे स्थानीय कृषि उत्पादन सामग्री परिवहन करा जाय परिबो। सेहिपरि रेल विभाग पोस्टल रेलवे माध्यम रे पार्सल परिवहन करिबो। As a part of Atmanirbhar Bharat, 2,000 kilometers of network will be brought under Kavach, the indigenous world-class technology for safety and capacity augmentation in 2022-23. 400 new generation Vande Bharat trains will better energy efficiency and passenger riding experience will be developed and manufactured during the next 3 years. 100 PM Gati Shakti cargo terminals for multimodal logistics facilities will be developed during the next 3 years. शिक्षा क्षेत्र को फोकस करछंती केंद्र सरकार। डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करबा पई आसीबो वन क्लास वन टीवी चैनल। कोविड जोगु पाठपढ़ारे जो व्याघात घटिछि तार भरणा पई एही नुआ योजना प्रणयन करा जायछि। सेहिपरि आरंभ हेबो पीएम ई विद्या कार्यक्रम। 200 चैनल रे प्रसारित हेबो पीएम ई विद्या प्रोग्राम। देश रे प्रतिष्ठा हेबो डिजिटल विश्वविद्यालय। A digital university will be established to provide access to students across the country for world-class quality universal education with personalized learning experience at their doorsteps. This will be made available in different Indian languages and ICT formats. बजेट रे नारी शक्ति योजना, मिशन शक्ति, मिशन वात्सायन, सक्षम अंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना प्रणयन करछंती केंद्र सरकार। सक्षम योजना रे 2 लाख अंगनवाड़ी केंद्रर उन्नतीकरण करा जिवो। Recognizing the importance of Nari Shakti as a harbinger of our bright future and for women-led development, during the Amritkal, our government has comprehensively revamped the schemes of the Ministry of Women and Child Development. Accordingly, 3 schemes, namely Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 were launched recently to provide integrated benefits to women and children. Saksham Anganwadis are a new generation Anganwadis that have better infrastructure and audio-visual aids, powered by clean energy and providing improved environment for early childhood development. 2 lakh Anganwadis will be upgraded under this scheme. गत वर्ष तुलन में चलित वर्ष बजेट रे प्रतिरक्षा विभाग व्यय अटकल 10% बढ़ी 5,25,166.15 कोटी टंका करा जायछि। केंद्र सरकार स्वदेशी सामरिक सामग्री को प्रोत्साहित करने सह आमदानी परिमाण ह्रास करछन्ति। प्रतिरक्षा क्षेत्र में 68% पुंजी स्थानीय शिल्पगुड़ी को दिया जिवो।
सेहीपरि 5% यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन रिसर्च डेवलपमेंट एवं टेक्नोलोजी क्षेत्र में खर्च करा जिवो। Atmanirbharta in defense. Our government is committed to reducing imports and promoting Atmanirbharta in equipment for the armed forces. 68% of the capital procurement budget will be earmarked for domestic industry in 22-23, up from 58% in 21-22. Defense R&D will be opened up for industry, startups and academia, with 25% of defense R&D budget earmarked. Private industry will be encouraged to take up design and development of military platforms and equipment in collaboration with DRDO and other organizations through SPV model. An independent nodal umbrella body will be set up for meeting wide-ranging testing and certification requirements. Artificial intelligence, geospatial systems and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, genomics and pharmaceuticals, green energy and clean mobility systems have immense potential to assist sustainable development at scale and modernize the country. कोरोना महामारी जोगुं प्रभावित होईछि मानसिक स्वास्थ्य। एहाको दृष्टि रखी स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न पदक्षेप नैछंती केंद्र सरकार। स्वास्थ्य इकोसिस्टम पाई गठन हेबो डिजिटल प्लेटफॉर्म। सेहीपरि आरंभ हेबो नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। उज्ज्वला योजना रे गरीबों को रंधन गैस बंटन स्कीम रे आउ 1 कोटी परिवार को शामिल करा जायछि। पर्यटन को प्रोत्साहन देवा पई पर्वतमाला रोपवे योजना रे पहाड़िया अंचल रे हेबो 8टी नुआ रोपवे। टायर 2 एवं टायर 3 सहरर विकास कार्य को त्वरान्वित करबा पई बढ़ाजिबो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था। सहरांचल रे ई वाहन को मिलिबो प्रोत्साहन। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। रेल बजेट रे यात्री निरापत्ता को दिया जाउछि गुरुत्व। सांबादिक सम्मेलन में रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहते कि एथर बजेट रे वैषयिक और यात्री निरापत्ता को गुरुत्व दिया जाइछि। स्वदेशी ज्ञानकौशल रे निर्माण करा ट्रेन। बजेट रे रेल विभाग पई 1.37 लाख कोटी व्यय बराद करा जाइछि। डाक और रेल सेवार समन्वय रे साधारण लोकन को हित साधन करा जिवो। छोट व्यवसायी, कृषक और हस्तशिल्पी लाभवान हेबे। 3 वर्ष रे 400 वंदे भारत ट्रेन चलाचल लक्ष्य रखा जाइछि। सेहीपरि भारत हेबा सॉफ्टवेयर रप्तानकारी देश बोली अश्विनी कहछन्ती। मार्च रे 5G स्पेक्ट्रम नेई ट्रायल अनुमोदन मिली पारे। धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को कि रेलवे के जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उन सब पॉइंट्स को आज अपने बजट के भाषण में स्थान दिया। न केवल आर्थिक सपोर्ट दिया, न केवल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया, और उसके साथ ही साथ जो कॉन्सेप्चुअल चेंजेस, जो जिस सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है उसकी विचारधारा का, उस सोच का, उस थॉट प्रोसेस का एक क्लियर रोड मैप अपने बजट के भाषण में। इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बेकारी समस्या दूर करने और मुद्रास्फीति नियंत्रण पर बजेट में व्यापक बंदोबस्त करा जायछि। आर्थिक अभिवृद्धि को गतिशील करने क्षेत्र में पदक्षेप निया जायछि। टिकस रे मध्य कोनोसी वृद्धि करा जाय नाही। संसद में बजेट उपस्थापन पर गणमाध्यम को यह सूचना देइछन्ति अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। से कहछन्ति जे रिजर्व बैंक डिजिटल करेन्सी इश्यू करिवो, तेबे क्रिप्टो करेन्सी और क्रिप्टो आसेट्स को नहीं कोनोसी निष्पत्ति निया जाय नाही। रिजर्व बैंक और स्टेक होल्डर सहित विचार विमर्श पर डिजिटल करेन्सी रूपरेख चूड़ांत करा। रिजर्व बैंक बाहर डिजिटल करेन्सी कारोबार करुवा व्यक्ति लाभ उपरे सरकार 30% टिकस लागू करा जायछि। कोरोना महामारी समय जेपरी लोकों उपरे टिकस भार न पड़िबो से नहीं प्रधानमंत्री परामर्श अनुसार टिकस रे 1 पैसा मध्य वृद्धि करा जाय नाही। बजेट रे वेतनभोगी करदातांक पई कोनोसी रिहाती दिया जाय नाही। ए संपर्कित प्रश्नर उत्तर देई अर्थमंत्री कहछन्ति जे से एथि पई दुखी, मात्र तांक पाखरे अन्य कोनोसी विकल्प नथिला। The Reserve Bank will be issuing a digital currency. Currency becomes all.
A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to the cryptocurrency, they are not currencies. So let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued, and that provision is now made, and the currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Many of the startups could rise to become unicorns within first 6 months of this year itself. Last year, 21 itself, you saw how many of them benefited by funds being made available in India through private equity. Now, if that sector needs further facilitation, obviously the sector will have to sit and talk with a group of people who can understand their needs and then suggest solution for policy making. That is why I have referred to the consultation which we've had with them and then said that we will appoint a committee which will go through it and come back to the government with such. It's not one particular segment. Kisan mein middle class nahi hai. MSME में मिडिल क्लास नहीं है, अफोर्डेबल होम्स में मिडिल क्लास नहीं है, उन सब को राहत दिलाया नहीं है. हम मिडिल क्लास मतलब क्या बोलते हैं? अफोर्डेबल होम्स जो देते हैं मिडिल क्लास को देते हैं. सीनियर सिटीजन्स में मिडिल क्लास नहीं है. आज स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के नाम पे जो जाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, वो मिडिल क्लास नहीं है. तो मिडिल क्लास के वर्णन हम मन में रखें. चलित बजेट जनहितैषी एवं प्रगतिशील, यह उभय किसान कल्याण एवं गरीब कल्याण पर प्रযোज्य. बजेट उपस्थापन पर देशवासी को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते जे 2022-2023 साधारण बजेट गरीब लोकों विकास पर उद्दिष्ट. यह अर्थनैतिक अभिवृद्धि घटाइबा सहित देशर युवपीढ़ी अधिक निजुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो. बजेट को प्रो पोर बोली कहते प्रधानमंत्री. से कहते जे केंद्र सरकार को मुख्य लक्ष्य रही जे सबु गरीब परिवार को पक्का घर, पाइप पानी, पाइखाना एवं रंधन गैस जोगाई देबा. सेपरि बजेट रे अत्याधुनिक इंटरनेट संजोग एवं डिजिटलाइजेशन को प्राथमिकता दिया जायछि. सीमावर्ती राज्य जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं उत्तर पूर्वांचल रे पर्वतमाला योजना रे भित्तिभूमि एवं कनेक्टिविटी वृद्धि को गुरुत्व दिया जायछि. प्रधानमंत्री कहछन्ति जे बजेट रे कृषक मानक कल्याण एवं गंगा नदी सफेई को मध्य प्रोत्साहित करा जायछि. सेपरि भित्तिभूमि विकास, पुंजी निवेश एवं निजुक्ति सुजोग सृष्टि पई बजेट रे विभिन्न व्यवस्था करा जायछि. ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा. ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है. और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का. ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है. 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे. मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. समय शेष होइछि. बुलेटिन को एट रखिबा. नमस्कार. लोकसभा आगत होइछि 2022-23 आर्थिक वर्ष बजेट.